Name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone, and very good morning to all of my dear students. How are you all? Well, I hope that everyone is in good health. So, students, I'm your teacher of subject English. Let's start today's lecture. So, let me tell you about day and date. So, dear student, today is 6th of January 2021 and day is Wednesday. Okay, let's move ahead to see the topic. First of all, I would like to tell you about the unit. It's unit 12, which is named Peter Rabbit. You must be very familiar with Peter Rabbit because we have just finished the reading of Peter Rabbit in our last two lectures. Okay, here is the topic. Today we are going to do book work of Peter Rabbit, which is A part question number 2 and then B part question number 1, which is given on page 104 and 105 of your textbook. So dear students, you have to take out your textbook, or please bring your textbook along with your pencils. Listen me carefully, and you have to watch the video as well very carefully. Okay, so let's start the lecture. Well, you can see the initial page of the Peter Rabbit. As you know that you must be familiar with the given pictures, because there is a one rabbit like who looks like adult, who is the mom of the four bunnies. Okay, who is the mom of the four bunnies, and they all are living in the sandbank under the or beneath the fir tree. Okay, so those bunnies whose named are Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. And if you remember, so जल्दी से recall कर लें, quickly recall the story theme, because Peter, who was Peter actually? So Peter was the most naughty monkey among all. One day the rabbit mom asked the bunnies that only go to the lane, go to the field to play, but don't go to the Mr. McGregor's garden. Okay, because if you go there, so you have to face the problem. But Peter doesn't listen. Peter did the same, and Peter didn't listen his mother. And Peter, what did Peter do? Peter ने क्या किया? He just went to the Mr. McGregor gardens, and then there he started to eat the French beans, and then suddenly he started to eat the parsley as well and the radishes as well. And then he saw Mr. McGregor, who was planting the cabbages. Okay, who was planting the cabbages in his field. And suddenly he saw the Peter, and he started to follow the Peter, that Peter, stop thief, stop thief. Okay, and Peter became very frightened, and then he just rushed to the garden. He wanted to save himself, and he said he run and run. Okay, means he ran very quickly, and then he wanted to hid himself in the tool shed. Okay, but what was happened actually, that tool shed was full of water, and Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed. मीन्स उन्हें बहुत श्योर था कि वो या तो फ्लावर पॉट में होगा या तो टूल शेड में होगा. ठीक, फिर उन्होंने क्या कहा? मिस्टर मैकग्रेगर सेड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन टुडे, आई विल फाइंड यू. बट क्या मिस्टर मैकग्रेगर सक्सेसफुल हो गया था पीटर को फाइंड करने में? व्हाट डू यू से स्टूडेंट्स, आप क्या कहते हो? Yes, think, start, think. Who is going to tell me first? Who is going to tell your mother first or your tuition teacher first? So yes, very good. So McGregor जो था वो टायर्ड हो गया था, became tired and he could not catch Peter at that time. ठीक है, लेकिन पीटर के साथ एक क्या हुआ था? पीटर has to face the fever as well. Okay, so he just started to rain, and he succeed to reach the sandbank. Okay, and then Peter mom gave him the chamomile tea as a dose of medicine. Okay, that was all about the theme of the Peter Rabbit. Now students, come to the page 104. There is a part question number 2. You can see
पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि तरतीब से सेंटेंसेस को लिखना है। देर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू पुट दैम इन ऑर्डर। मीन्स आपने मुझे बताना है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द होल स्टोरी, आई हैव डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग, सो यू आई एम श्योर दैट you have kept the story theme in your mind, because that was very interesting story, isn't it? So I'm going to say the statements one by one. अब आपने बताना है कि कौन सी पहले लाइन आएगी, ठीक है। पीटर वेंट इनटू द टूल शेड। क्या पीटर सबसे पहले टूल शेड में गया था? नो। पीटर वेंट टू द बेड। क्या पीटर बेड पे गया था? नो। पीटर्स मदर गेव हिम सम कैमोमाइल ट्री। ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। पीटर हिड इन अ वाटरिंग कैन। ये भी हुआ था, लेकिन ये तो स्टोरी के मिड में था। पीटर सिस्टर हैड बेरीज एंड मिल्क। ओ माई गॉड, ये हुआ था क्या? पीटर्स सिस्टर हैड बेरीज एंड मिल्क, ये भी थोड़ा लेट हुआ था। पीटर्स मदर वेंट टू बाय सम ब्रेड। पीटर्स मदर वेंट टू बाय सम ब्रेड, ये सबसे पहले हुआ था। इसमें आपने ए लगाना है, ठीक है, इसमें आपने ए लगाना है। पीटर्स मदर वेंट टू बाय सम ब्रेड। ये जो यू कैन सी इन द पिक्चर there are some letters written, so please dear student don't follow these letters because it's not in correct order. ये correct order में नहीं है। Follow the teacher, okay, as I'm asking you to do, you have to follow me. Peter's mother, because it's a previous book, so that's why, okay. Peter's mother went to buy some bread. It's the first, ये it comes first, इसके आगे आपने a लगाना है। आगे देखें, Peter saw Mr. McGregor। पीटर ने मिस्टर मैकग्रेगर को देखा। यस, इट्स द नंबर बी। पीटर गॉट स्टक इन द नेट। पीटर गॉट स्टक इन द नेट, इट्स नंबर सी। पीटर फेल्ट इल। अच्छा ठीक है, अब हम ढूंढते हैं डी में कौन सा है। ए बी सी तो हो गया, अब डी में कौन सा है? पीटर वेंट इनटू द टूल शेड, ठीक है। सी के बाद पीटर गॉट स्टक इन द नेट, देन पीटर वेंट इनटू द टूल शेड, इसके आगे आपने डी लगाते हैं। अब डी के बाद हमने देखना है ई पे कौन सा है। ये देखें जी, पीटर हिड इन अ वाटरिंग कैन। हिड इन अ वाटरिंग कैन, ये ई पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें जी, एफ में क्या आता है? पीटर फेल्ट इल। पीटर बीमार हो गया। यस, जब वो पानी में गया तो वो तो बीमार हो गया था। ओके, एफ के बाद जी। जी देखते हैं, जी में क्या है? पीटर वेंट टू बेड। जब वो बीमार हो गया तो वो उसे बेड पे लेटाया गया। फिर एच में आता है, पीटर्स मदर गेव इन सम कैमोमाइल टी। यस, एच में आ गया। सबसे लास्ट में क्या आया था? आई। पीटर सिस्टर हैड बेरीज एंड मिल्क, दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। फ्रॉम दिस वे यू हैव टू अरेंज द all the statements, okay, the answer is given like this. एक statement के आगे D है, B statement के आगे G है। every statement you have to follow like this, given A B C D E F G H I. All right, now come to the next question. Working with words, change the first letter of each word to make a second word. Means you have to change the first letter of each word to make a second word. There is a word in front of you, you have to change the first letter to make the second word. Draw a picture to example something to play cricket with bat, okay, becomes something to wear on the head, hat, okay. You can see the picture is given of the bat because the bat is word already given, and the second word which we made by erasing the first letter and putting the first letter is the H, H-A-T, hat. So we have to draw the picture as well, okay. So question number 1, a small animal becomes a place to live in. Means वो कह रहे हैं कि a small animal, एक छोटा सा animal which is a mouse, becomes a place, वो place बन जाता है to live in, रहने के लिए। अब ये माउस की पिक्चर है, ठीक है। सबसे पहले आपने माउस की पिक्चर से पहले लिखना है माउस, ठीक है। फिर माउस के बाद लिखना है माउस बिकम्स हाउस, ओके। माउस बिकम्स हाउस, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द हाउस एज वेल, ओके। छोटी सी हर्ट सा बना दे, माउस और हाउस, MOUSE माउस। जब फर्स्ट लेटर को व्हेन वी विल इरेज द फर्स्ट लेटर, तो और व्हेन वी पुट हियर H, so it would be the house, mouse or house. Number 2, a thing to hold rice in becomes a part of your body. Rice means this is a sack. सैक, ये राइस की बोरी है ना, इसको सैक कहते हैं, सैक।
तो वो आपको कह रहे हैं कि आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है, SACK, सैक, सैक बिकम्स बैक। आप इधर बैक की पिक्चर बनाओगे, ओके, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर एज वेल। कम टू द पेज 105, go very upmost line number 3, something you read becomes someone who gets meals ready। यानी कि वो कह रहे हैं कि समथिंग यू रीड, जो आप पढ़ते हो, becomes someone, वो कुछ और बन जाता है, who gets meals ready, जिसमें आपको लगता है कि खाना तैयार हो गया। अब यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बुक, आपने बुक से पहले लिखना है बुक बिकम्स, क्या खाने के लिए बन जाता है, क्या होता है, मील जो खाते हैं उसको क्या करते हैं, कुक, COOK, कुक, ठीक है, बुक कुक, ओके। That's all for today's lecture. Here you can see the answers as well in front of you. Mouse becomes house, sack becomes back, book becomes cook, okay. So homework is that, do book work on pages 104, 105. Take care of yourself, remember me in your prayers, please, 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 and take care of yourself. Allah Hafiz.